बताते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस वैभव वैभव बंद कर आवाज नहीं आ Suppose we have equilibria of this nature, perhaps vapor or gas. कर दो Three states may also be in the बंद कर दो the state of आवाज नहीं आ रहा। equilibrium. H2O solid, that is ice, reversible from H2 liquid, reversible and H2 gas or vapor. तो अगर ये इक्विलिब्रिया सपोज कोई भी ले लीजिए, लेकिन ये इक्विलिब्रिया अगर आप कंसीडर करेंगे तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, the molecules in the liquid phase have a tendency to escape from here and to go into the vapor state, and the molecules in the vapor state have a tendency to go back into the liquid phase. This escaping tendency एक दूसरे अवस्था से दूसरे अवस्था में जो भागने की जो प्रवृत्ति है वो एक तरह से हम उसको फ्यूजिटिव कहकर भगवा रहे, तो उसी से टर्म बना हुआ फ्यूगासिटी। इन द अवर इक्विलिब्रिया, ये लिखा हुआ इन द अवर इक्विलिब्रिया, molecules in the liquid phase, molecules in the liquid phase will have a tendency to escape into the vapor phase. ध्यान से सुनिए, बाद में रिपीट मत करिए। Will have a tendency to escape into the vapor phase क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? इवोपरेशन। क्या कहलाएगी प्रोसेस? escape into the vapor phase by evaporation while those in the vapor phase will have a tendency to escape into the liquid phase. Will have a tendency to escape into the liquid phase. Process क्या होगी? By condensation. By condensation. At equilibrium, the two escaping tendency will be equal. At equilibrium, two escaping tendencies will be equal. जो भागने की प्रवृत्ति है दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। thus इस प्रकार each substance, इसको पूरी को अंडरलाइन करेगा जो आप दिखा रहा हूं, each substance in a given state has a tendency to escape from that state, So this escaping tendency was termed by Lewis as fugacity. Lewis ने दिया ये term. Tendency was termed by Lewis as fugacity.
escaping tendency was termed by Lewis as fugacity. ये एक आध नंबर में आपसे पूछा जाता है significance of fugacity, तो आप इस तरह से इसका कर सकते हैं. Now put it in the concept of activity. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाया था ना? नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट पढ़ाया था. How it is related with that? The concept of activity. Since the absolute value of free energy, since the absolute value of free energy or chemical potential is not known, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है निरपेक्ष मान, जो कि चाहे केमिकल पोटेंशियल हो चाहे फ्री एनर्जी हो, वो ज्ञात नहीं होती है. व्हाट वी मेजर एक्चुअली इज द चेंज इन फ्री एनर्जी और द चेंज इन केमिकल पोटेंशियल इन एनी केमिकल प्रोसेस, राइट? एब्सोल्यूट वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, नॉट जी. डेल्टा जी इज फ्री एनर्जी चेंज. G is the absolute value of free energy. Therefore, since the absolute value of chemical potential and free energy is not known, what actually you measure is the change in free energy. Therefore, is not known. Therefore, it is not possible to evaluate mu I star, mu I star, mu I लिखिए और ऊपर स्टार लगा दीजिए. ये आपका केमिकल पोटेंशियल ऑफ द ith काइंड इन प्योर स्टेट है. क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल टू इवैल्यूएट mu I star ऑफ a substance. It is not possible to evaluate mu I star of a substance. However, this difficulty has been overcome by referring all free energy by referring all free energy or chemical potential measurements, free energy or chemical potential measurements for any given substance to a standard reference point, to a standard reference point. माना let mu I with the chemical potential of a substance, chemical potential of a substance in pure state let mu I with the chemical potential of a substance I in pure state and let Fi be its fugacity. Therefore, the equation mu I equal to
mu I equal to mu I 0 या स्टार लिखा है स्टार प्लस RT ln Fi लिखा है ना दूसरी बार Yes. equation mu I equal to mu I star plus RT ln Fi may written as mu I equal to mu I star plus RT ln Fi 0 mu I equal to इधर देख लीजिए mu I equal to mu I star plus RT ln Fi 0 0 means standard state स्टैंडर्ड स्टेट रेफरेंस पॉइंट जो हमने माना है तो उस कंडीशन में जो जनरल इक्वेशन है केमिकल पोटेंशियल का ये केमिकल पोटेंशियल ऑफ द ith कंपोनेंट is equal to mu I star plus RT ln Fi. For pure state, this Fi may be written as Fi 0. Let माना mu I with the Cp, mu I be the Cp, that is chemical potential, mu I be the chemical potential of the same substance, chemical potential of the same substance in some other state. In some other state, किसी दूसरी अवस्था में रखा हुआ है chemical potential, then mu I equal to mu I star plus RT ln Fi right? The difference between the chemical potential of a substance, the difference between chemical potential of a substance in any state and that in pure state is given by mu I minus mu 0, mu I 0. This becomes RT ln Fi upon Fi 0. Or you can write it as mu I equal to mu I 0 plus RT ln Fi upon Fi 0. यहीं पर जो है आपका ये Fi अपॉन Fi 0 और F अपॉन F0 और Fi अपॉन Fi 0 की जगह आप एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको हम एक्टिविटी A इक्वल टू F अपॉन F0, ये जनरल टर्म है। और अगर ith कंपोनेंट के लिए या i सब्सटेंस के लिए है तो एक्टिविटी ऑफ ith कंपोनेंट और i सब्सटेंस इक्वल टू Fi अपॉन Fi 0, Fi अपॉन Fi 0। राइट, तो ये एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, activity of a substance in any given state is defined as अब यहीं से डेफिनेशन करेंगे इसकी, देखिए
क्या है? रेशियो. क्या है? रेशियो ऑफ द fugacity defined as the ratio. हाँ बस हाँ. क्या है? Fugacity, the ratio of the fugacity of the substance in that state to the fugacity of the same substance in क्या है? जीरो मतलब स्टैंडर्ड. Therefore, the above equation, last one, the above equation reduces to mu I, इसका ऐसे लिखते हैं, mu I equals to mu I 0 plus RT, जो रेशियो लिखा है Fi upon Fi 0, that is AI. या सिंपली A लिख देते हैं RT log A, ये लिख दिया. I कंपोनेंट के लिए पहले लिखा हुआ, इसलिए I यहाँ से है, क्योंकि आपने लिखा रेशियो लिखा. तो ये इसका एप्लीकेशन आपने वहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी किया, राइट? वहाँ पे एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट जब पढ़ रहे थे, इसलिए आपके थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी समटाइम्स न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड, राइट? दैट इज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, माना कोई सिस्टम है तो कैसे बना होगा देखिए. दैट इज सिस्टम of 1 mole of a substance, that is system consisting of, that is system consisting of 1 mole of a substance changes from a state in which its CP, its chemical potential, its CP, its chemical potential or free energy both being identical, दोनों एक ही हैं, both being identical since we are dealing with 1 mole of the substance, is mu1, comma to another state, दूसरी अवस्था में, in which its CP, its chemical potential is mu2. The change in chemical potential delta mu equal to mu2 minus mu1.
तो ये म्यू टू हो जाएगा आपका म्यू जीरो प्लस आर टी लॉग ए टू हायर स्टेट माइनस म्यू जीरो प्लस माइनस आर टी लॉग ए वन and this delta mu जो ये लिखा हुआ है, this delta mu will be equal to RT log E2 upon A लिखा जा सकता है, and this is equal to your delta G because chemical potential and free energy are identical for one mole of the substance. Both are identical आपने लिखा हुआ है. तो लाइकवाइज आपने डेल्टा जी को आपने कहीं पर शायद आर टी लॉग P2 अपॉन P1 भी लिखा हुआ है, तो इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा. इट मींस एक्टिविटी ए इसके जगह लिखा हुआ है हमने प्रेशर. फॉर रियल gases एक्टिविटी रिप्लेसेस प्रेशर. रियल गैस के लिए हम प्रेशर की बात करते हैं. एक्टिविटी thus activity of a gas like fugacity की तरह serves as a thermodynamic counterpart of gas pressure. Thermodynamic counterpart of gas pressure. कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट टू nations, the prime minister of our country, if it is related with the prime minister of the other country, it may be taken as, for example, Sunak. क्या है उनका नाम? Rishi Sunak is a thermodynamic counterpart of the Indian Prime Minister Narendra Modi. Likewise, for the real gases, the pressure, we talk pressure in the case of real gases, therefore pressure or activity are thermodynamic counterparts of each other, right? Thermodynamic counterparts of each other, as we talk the same sense, same meaning in the case of fugacity, because fugacity, in the case of fugacity, those chemical expressions which are not applicable for real gases are made applicable for ideal gases. तभी तो टर्म फ्यूगासिटी आया. फ्यूगासिटी कैसे टर्म आया? फ्यूगासिटी टर्म ये आया कि जो भी अभी तक आप जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, चाहे वो एंट्रोपी का, चाहे एंथैल्पी का हो, चाहे किसी का भी हो, वो expressions, they are absolutely or strictly applicable only for the ideal gases. Those expressions which are not applicable for the real gases, because in the case of real gases, PV is not equal to RT. For some gases, PV is greater than RT, for some gases, PV is less than RT. Therefore, in order to make those expressions equally applicable for real gases, a new term fugacity was introduced by Gibbs. तो ये वहीं से स्टार्ट आया है. तो प्रेशर, थर्मोडायनामिक प्रेशर काउंटरपार्ट ऑफ प्रेशर इज एक्टिविटी. नाउ राइट डाउन एक्टिविटी कोफिशिएंट. वहाँ हमने कहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में A इक्वल टू गामा m.
right? Right, of activity coefficient. For real gases, वास्तविक गैसों के लिए A is proportional to capital T. Activity is proportional to pressure. Or A equal to gamma P. And gamma is known as activity coefficient. Write down the usual problem. The activity of 2.5 moles of a substance. 2.5 moles of a substance changes from 0.05 to 0.10. What would be the change in its free energy? What would be the change in free energy at 27 degrees Celsius? चेंज इन फ्री एनर्जी वही जो अभी अभी आपने लिखा है, जो फ्यूगासिटी का लिखा था, जो डेल्टा पोटेंशियल के लिए लिखा था आपने, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन आर टी लॉग E2 अपॉन T1 और E2 अपॉन T1। यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है तो आप डेल्टा जी इक्वल टू एन आर टी लॉग E2 अपॉन T1। डेल्टा जी इक्वल टू एन आर टी लॉग A2 upon A1। इसी को आप देख सकते हैं 2.303 एंड R3 LOG dot A2 upon A1। दिया हुआ 2.303 एंड 2.5। R अगर कैलोरी में रखना है तो 2 हो जाएगा, अदरवाइज 8.314 तो जूल पर केल्विन पर मोल होता है 27 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस एंड लॉग कितना है 0.1 अपॉन 0.05। कितना हो जाएगा 0.05 नहीं दिखाएगा 0.5 दिखाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें लॉग 2 आ जाएगा। तो लॉग 2 आप जानते हैं 0.3010 होता है। अब इसकी वैल्यू दी ना हो तो क्वेश्चन छोड़ो, और जितना भी आया है उसको देख लीजिए, जूल में आएगा, है ना। जैसे अभी आपने रेफरेंस स्टैंडर्ड स्टेट की बात की है, आया है ना, टर्म आया है। तो यहाँ पर रेफरेंस स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, रेफरेंस स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट, क्योंकि रेफरेंस स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट्स फॉर सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए अलग अलग हो। रेफरेंस स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट जैसे अभी हमने आपको बताया था, इट इज नॉट पॉसिबल टू calculate the absolute value of the chemical potential of free energy of any substance, right? Right, okay. Right, now, there is no means of finding absolute value of free energy, absolute energy of free energy or Cp, chemical potential.
of any substance, it is, so therefore, it is necessary to make such measurements, with reference to the value obtained for the some convenient though arbitrary reference state called arbitrary मतलब जो साइंटिफिक ना आर्बिट्री कोई भी मन चाहे तो arbitrary reference state called standard state. Standard state. Reading the standard state for a gas. The standard state for a gas. Standard state for a gas at any given temperature is defined इसके बाद अंडरलाइन करेंगे is defined as that state in which the fugacity of the gas is equal to unity. Since A equal to F upon F0, if F0 is 1, A is F, activity is equal to fugacity. The standard state for a gaseous component is such that Fi is equal to Ai is equal to 1. The standard state for a liquid is the standard state for a liquid is द्रव के लिए the standard state for a liquid is underline करेगा is the pure state of the liquid at 1 atm pressure. 1 atm pressure at any given temperature. Right? In this state of the liquid is our sun. In this state of the liquid, F equal to F0 and A equal to 1. F equal to F0 and A activity is 1.
Therefore, the standard state for a liquid component, the standard state for liquid component I in a liquid solution, I in a liquid solution is the pure state of the component, is the pure state of the component such that AI is equal to 1. AI equal to 1. The last, the standard state for a solid. The standard state for a solid the standard state for a solid is the pure state of a solid at 1 atm pressure, 1 atmosphere pressure at any given temperature. And in this state, activity is equal to 1. इसीलिए आप जब कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, सपोज कोई भी इक्वेशन हो, जिंक -2 इलेक्ट्रॉन जिंक सॉलिड इक्वल टू, आप इसको अगर जिंक पॉजिटिव लाइन लिखते हैं, जब इसमें आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का लास्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, E equal to E0 minus 0.0591 upon N, तब तक ये हो गया, कभी 0.509 जो आया है, कभी लॉ राइट हैंड लॉ एक्टिविटी ऑफ ऐसे ब्रैकेट के अंदर जिंक 2.3 एक्वस अपॉन एक्टिविटी ऑफ जिंक सॉलिड क्या था, और सॉलिड की एक्टिविटी क्या होती है, क्या लिखा आपने, ये रिफरेंस इसलिए आप वहाँ भी सॉलिड की एक्टिविटी इलेक्ट्रोड्स आते हैं, सॉलिड इलेक्ट्रोड्स, उसके लिए एक्टिविटी बनती है। तो ये एक तरह से ये सपोज हम ये कहें कि आपको किसी एग्जामिनेशन में जो है, इट इज रादर यू कैन से इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। तो जो मैक्सिमम अचीवेबल परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, अगर हम उसको एक आर्बिट्री वैल्यू ये चुनते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज 80 हो सकता है, 80 से ऊपर नहीं हो सकता है, तो 80 जो हमने रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है, उस रेफरेंस पॉइंट के तारतम्य में कोई इंडिविजुअल का परसेंटेज क्या है उसकी तुलना की जा सकती है, राइट, like in actual conditions, because it is not possible to obtain 100 out of 100. It has been observed, मैंने अधिकतर देखा है, यहाँ अगर कोई आप न्यूमेरिकल बता भी दें, उसके in spite of that, हमने एग्जामिनेशन में देखा है लड़के उसको नहीं कर पाते हैं, आई डोंट नो क्या इसका कारण है, एक दो दिन पहले भी अगर बताते हैं न्यूमेरिकल आने वाला है, उसके बाद भी वो गलती कर जाते हैं। इसलिए थर्मोडायनामिक्स और पर्टिकुलर फिजिकल केमिस्ट्री में बिना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के कोई भी क्वेश्चन आपके इसमें नहीं आता। एक जो ये यहाँ इंट्रोपी सबसे पहले नस्ट हीट थ्योरम है, उसके बाद थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स है, उसके बाद आपके फ्यूगासिटी आदि टर्म्स हैं। तो इसमें फ्यूगासिटी जैसे न्यूमेरिकल अभी आपको बताएगा, इसी तरह से मैं कई एग्जामिनेशन से होते हुए ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अधिकतर देखता हूँ, उसके बाद भी बच्चों का गलत होता है। कभी कहते हैं सर इसमें आपने आर की वैल्यू नहीं दिया था, कभी लॉग की वैल्यू नहीं दिया था। तो एक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिखी है
जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे याद रखें। एक टर्म इसमें आता है तो रेजिडुअल एंट्रोपी है। करा दिए गए थे कोई निकल कराया मैंने इसमें इसमें ग्रेडेड डालिए रेजिडुअल एंट्रोपी के वाले RESIDUAL रेजिडुअल एंट्रोपी RESI RESIDUAL रेजिडुअल एंट्रोपी entropy is calculated using residual entropy की definition लिखिए entropy is calculated using the third law are called thermal entropies However, कहीं पर भी लिखोगे इसका कॉमन लगेगा। However, the statistical entropies, सांख्यिकीय entropy, the statistical entropies calculated by the method of statistical mechanics ब्रैकेट में लिखना फॉर एग्जाम्पल इजी लिखना है या फॉर एग्जाम्पल by using the Boltzmann entropy equation at 0 Kelvin, that is S equal to K log W. S is equal to K log W. बताइए निगेटिव भी आपको दी है W is thermodynamic probability इसके बाद यही चैप्टर शुरू होना है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स बताइए W जो है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या लिखा है आपने S equal to K log W ब्रैकेट बंद कर दीजिए are more important entropies of the substance .
such as hydrogen, H2, deuterium D2, CO, NO, H2 are not zero at zero K. Question answer, suggest some examples for which third law of thermodynamics is not applicable. So ये are not zero at zero Kelvin as third law formulates. But are finite. But are finite. These entropies are called residual entropies. देखिए जो आपको COOC ये लिखा है इसके एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में आपको दिखाई देगा CO, इसका ओरिएंटेशन OC भी हो सकता है। NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका ओरिएंटेशन ON भी हो सकता है। अर्थात इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उस कितनी आ रही है, 2 है, ठीक है ना, 2 है। और इसीलिए ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो Kelvin must approach or must be zero, but there are substances, as I told earlier, that hydrogen exists even with the 0 Kelvin temperature in ortho and para hydrogen. Probability of existence in ortho and para. Likewise, deuterium, those structure होते हैं, and H2 due to the presence of the hydrogen bond, their entropy at third law of thermodynamics formulates it should be zero, but not actually. The value of entropy for such substance is zero, and such type of entropy जो भी calculate करके आएगी, that entropy is called residual entropy. अब जब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे आप के लॉ ऑफ डब्ल्यू जो आपने पढ़ा है, इसके आधार पर फिर एंट्रोपी का कैलकुलेशन वहाँ भी है, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक सिस्टम के लिए वहाँ पर भी इसको। इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कोई भी एक एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि दिस सब्सटेंस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड रिप्रेजेंट्स टू ओरिएंटेशंस एट 0 Kelvin, कैलकुलेट एट्स रेजिडुअल एंट्रोपी। तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगे S = K log of W, इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल आएगा। K क्या है इसमें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, S = K log W से इसको इस रूप में भी लिखते हैं, S = K log W को आप 2 to the power NA आपका जो है ये एवोगैड्रो नंबर है, सॉरी NA एवोगैड्रो नंबर है। तो उसका लॉग लेने पर क्या आ जाएगा, NA log 2 है, N K भी तो है, K कहाँ चला गया, N पहले आ जाएगा, N into K, N into K आपका R होता है, N into K क्या होता है, R। तो R की वैल्यू अगर नहीं भी दिया हो, आप अपने हिसाब से या तो 8.314 रखें या 2 कैलोरीज रखें, राइट। उसके आधार पर जो एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे उसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में करा दिया था हमने, आज भी कुछ कराया हुआ है, और एंट्रोपी कैलकुलेशन का तो ये इसमें
सर